Yes friends, very good morning everyone. Chale, can I start? First tell me, have you done homework? Only 2 questions were there na for homework. Question number 5th. तो पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए. एक सेकंड. तो सिमिलर कॉलम ड्रॉ किया ना अपने सिचुएशन 1 एंड प्लान ए बी, सिचुएशन 2 प्लान ए एंड बी. इसी मैनर में कॉलम ड्रॉ किया. तो बताइए ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा था? 1.5, 1.5, 1.8 and 1.8. Then financial leverage 1.07, 1.03, 1.09, 4, and then combined leverage 1.16, 61 ना, हाँ 1.54 or 55 whatever, 1.96, 1.87, right? Are these answers correct? Any difficulty in any of the calculation? Okay. And what is the next question which was there for homework? 11th. Let me check. 11 में हमें calculate क्या करना था? Sales calculate करना था. So what is the sales you are getting? 12 lakhs. Is everyone getting 12 lakhs? Anyone who is not getting and I need to discuss this? Should I explain? चलिए फिर भी एक बार. आपने प्रॉपर फेयर में सॉल्व किया ना, रफ में नहीं किया है. हाँ. Operating leverage is 2, total leverage is 5. So financial leverage will be 2.5. Is it right? Variable cost दिया आपको 6,50,000. Interest and preference dividend is been given to you 75 and 36,000 respectively. Tax rate is been given. Sales revenue पूछा है. तो वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी. अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला यूज करूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट? ऑपरेटिंग लेवरेज इज बीन गिवन. अगर मैं ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेता हूं तो आई विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन, एंड वंस आई गेट कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आई विल बी कैलकुलेटिंग, वेरिएबल कॉस्ट इज बीन गिवन, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द सेल्स. सो ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल लेवरेज यूज करना होगा, right? So first working will be EBIT, in which I'll be writing financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate, right? So by using this कितना आ रहा है EBIT? 2,75,000. So second working will be for contribution. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. So contribution कितना आ रहा है? 5,50,000. And then third working will be the sales. So contribution is equal to sales minus variable cost. Therefore sales will be equal to contribution plus variable cost. So 5,50,000 plus 6,50,000. So it will be 12 lakhs. I hope everyone has got the answer of 11th correctly, right? Can we proceed? चलिए. Which was the last example जो हमने कल कंप्लीट किया था? 9 कंप्लीट किया था क्या हमने? ओके. 9th we had complete. Just tell me right from start. First हमने कंप्लीट किया है, सेकेंड हमने कंप्लीट किया है. सेकेंड just check. सेकेंड नहीं किया ना, तो मार्क सेकेंड क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर टुडे. ओके. सेकेंड यहाँ पे जस्ट आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. तो जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. ऑल्सो मार्क थर्ड क्वेश्चन एज होमवर्क. बस 2 ही क्वेश्चंस होमवर्क के लिए करना है. ओके. फोर्थ हमने किया है, फिफ्थ आपने ऑलरेडी किया हुआ है, 6 नहीं किया. अब ये जो 6th क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बट डोंट नो व्हाई आईसीआई को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्यार है. सेवरल टाइम्स exactly similar question or sometimes numbers change करके question पूछा है, and number change that also in the same proportion. Last to last example यहाँ पे एग्जाम में 2 lakhs था, year 2,40,000 था, similar proportion में change किया था. Okay, so mark this question as very important. Simple question है, but many times this type of question has been asked by your
ICAI. So read this sixth question. जब आप रीड कर रहे हो थरली रीड करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है. टोटल कैपिटल 20 लाख का है, जिसमें से शेयर कैपिटल 10 लाख, डेट 10 लाख, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है. 1 लाख यूनिट्स करंटली सेल कर रहे हैं, यहां से अपना सेल्स इंक्रीज हो रहा है 20% से, दैट इज 1,20,000, राइट. सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 4. फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 lakhs, इनकम टैक्स रेट 35%. You are required to calculate financial leverage at 1 lakh, 1,20,000, operating leverage at 1 lakh, 1,20,000. तो आप combined leverage भी calculate कर लेंगे. And percentage increase in EPS also we will calculate. Okay, मतलब हमें दो कॉलम्स बनाने हैं, एक लाख यूनिट्स एंड 1,20,000 यूनिट्स. एंड आपका जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, सो दिस EAT इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यू विल बी गेटिंग EPS. तो परसेंटेज इंक्रीज इन EPS कैलकुलेट कर सकते हो. एंड इसी टेबल में एट द एंड वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, राइट. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. And are we required to comment? हाँ, you have to comment on the behavior of operating and financial leverage in relation to increase. तो ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क के लिए आ सकता है. ओके, कैन वी सॉल्व इट साइमल्टेनियसली? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 25. Write down. Calculation of operating, financial and combined leverage. And EPS. Serial number, particulars, right hand side, sales volume 1,20,000 units. So format you already know. So first I should be writing sales, no? Sales at the rate. Selling price per unit कितना दिया है? 10 rupees per unit. So sales at the rate rupees 10 per unit. $10 lakhs and 12 lakhs. Less variable cost at the rate 6 per unit. So 1 lakh into 6 rupees, that is 6 lakhs, and 120 into 6, it will be 7,20,000. So I will be getting contribution 4 lakhs, 4,80,000. Less fixed cost. अब fixed cost कितना दिया आपको? यहाँ पे दिया है. Fixed expenses is 2 lakh rupees. So this remains same. . 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
So EBIT 2,80,000 लेस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपीज डेट है 10% से, राइट? तो हियर ओनली वी कैन शो वर्किंग 10 lakh into 10%. So interest will be 1 lakh. So EBT 1 lakh and 1,80,000. Less tax at the rate. What is the percentage of tax rate? 35%. So 35,000 over here, and 180 का 35% कितना है? 63,000. So here either I can write earnings after tax or earnings available to equity shareholders. Earnings available to equity shareholders. 65,000. 1,17,000. Okay. What next? Number of equity shares. तो शेयर कैपिटल कितना है आपका? 10 lakhs दिया है, राइट? एंड पर शेयर द वैल्यू इज 100. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 10 lakh डिवाइडेड बाय 100. 10,000 ना? So I'll be getting EPS. This will be serial number I upon G. Total earnings divided by number of equity shares. So much? 6.5 and 11.7. What we'll do? यही पे पहले ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करते हैं, एंड एट द एंड विल शो वर्किंग फॉर इंक्रीज इन EPS percentage. Okay. So next serial number we can write operating leverage. Operating leverage is calculated as contribution upon EBIT. So first column में contribution was 4 lakhs and EBIT was 2 lakhs. So कितना आएगा ये? 2. And 480 divided by 280. Is it 1.71? Financial leverage. Now this is calculated as EBIT upon EBT. So 2 lakhs upon 1 lakh. Now this is also 2. And 280 divided by 180. 1.56. And then combine the leverage. Combined leverage is calculated as, simply we can take operating leverage into financial leverage. So 2 into 2, 4. And this कितना रहा? 2.67. 2.67. लेवरेज पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. तो इसलिए मैंने कहा था कि लेवरेज पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मार्क्स लूज नहीं करना है आपको. ओके, डन विद दिस सो फार. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन EPS. सो बिलो दिस वी कैन जस्ट कंप्लीट दिस स्टेटमेंट एंड वी कैन राइट डाउन percentage increase in EPS. Can you tell me how much is the percentage increase in EPS? कितना आ रहा है?
अब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। इंक्रीज पहले कैलकुलेट करेंगे, बेस से कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 80%, हाँ। आपका एग्जिस्टिंग कितना था 6.5, यहाँ से इंक्रीज कितना हुआ है 11.7 ना। तो हाउ मच इज द इंक्रीज 11.7 माइनस 6.5, 5.2 से इंक्रीज हुआ है। कौन से लेवल से, 6.5 से। तो 5.2 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 100 बराबर। सो डायरेक्ट वी कैन शो दिस वर्किंग। So here 11.7 minus 6.5 divided by 6.5 into 100. %, or alternatively this we can say what we have written is method 1. हम लेवरेज का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। अब आपको ईबीआईटी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ईबीआईटी परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, जस्ट टेल मी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। %, एग्जिस्टिंग लेवल से 40% से इंक्रीज हुआ है बराबर। ईबीआईटी 2 लाख था, 2,80,000 हुआ है। एंड फाइनेंशियल लेवरेज एग्जिस्टिंग लेवल पे कितना था 2, राइट। व्हाट डज दिस नंबर फाइनेंशियल लेवरेज 2 सिग्निफाइज कि एग्जिस्टिंग लेवल से ईबीआईटी अगर 1% से चेंज होगा तो ईपीएस 2% से चेंज होगा। अब आपका ईबीआईटी अगर 40% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस कितने परसेंटेज से चेंज होगा, 80। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। So you can write percentage increase in EPS 40 into 2 that is 80%। यहाँ पे हमने लेवरेज यूज किया है, बट वैसे भी EPS की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, so therefore first method is also correct। डन। कमेंट क्या लिखे, हमें कमेंट लिखना है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज पे। सेम एक्सप्लेनेशन, जैसे जैसे मेरा सेल्स लेवल इंक्रीज होगा मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कम होगा। अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा। सो इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 2 to 1.71। सिमिलरली जैसे जैसे मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है वैसे मेरा फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट 1 लाख पे रिकवर हो चुका है। अब इसके ऊपर जो सेल्स आ रहा है वो डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट को ऐड करेगा, right? So financial risk will also reduce. So accordingly, the financial leverage will also reduce. This is what we have to write as a comment. So can we write down? So below this, write down next point. Comment on behavior of operating and financial leverage. Comment on behavior of operating and financial leverage. First point, operating leverage falls from 2 to 1.71. When sales increases from 1 lakh to 1,20,000 units. Written, comma, this is because as margin of sales increases, margin of safety sales, sorry, margin of safety sales increases, comma, operating risk
reduces full stop. Next line. Margin of safety sales and operating leverage are inversely related. Margin of safety sales and operating leverage are inversely related. Second, as sales increases from 1 lakh to 1,20,000 units, financial leverage falls from 2 to 1.56. This is because with increase in sales, EBIT rises. With increase in sales, EBIT rises. This results in a reduction of financial risk. That's it. इतना सब कुछ लिखोगे तो 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, ये क्वेश्चन आपको आज जब 2 क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे ये क्वेश्चन अगेन गो थ्रू करना है. ओके, रीड दिस क्वेश्चन, भले अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं बट एटलीस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए 7th क्वेश्चन आंसर मुझे आप बताएंगे. पहले रीड करिए. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 5-1 मतलब इट इज 5 ओनली. ओके, इसका इंप्लीकेशन ये कि 1% चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट इन 5% चेंज इन EBIT. ओके, तो ऑपरेटिंग लेवरेज 5, 6, 2, फाइनेंशियल लेवरेज 3, 4, 1, टैक्स रेट 35%. बस इनकम स्टेटमेंट बनाना है. अब इनकम स्टेटमेंट मतलब अपना सेम फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वगैरह वगैरह. ओके, राइट डाउन. 7th क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन आल्सो एज इंपॉर्टेंट. इसमें फर्स्ट वर्किंग इनकम स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, particulars, A limited, B limited, C limited. 3 कंपनी है ना. अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एज इट इज लिखेंगे, बाकी का इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट व्हाट यू शुड बी राइटिंग, सेल्स. क्या क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है? नहीं दिया है, सो कीप एज इट इज. माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं. 66 2/3% ऑफ सेल्स दिया हुआ है. तो अगर सेल्स पता हो तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं. तो सेल्स ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट इमीडिएटली फाइंड नहीं कर सकते. राइट, सो वी कैन नॉट राइट वेरिएबल कॉस्ट एट दिस स्टेज. देन आई विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन भी पता नहीं. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. कहां पे दिया? वेरिएबल कॉस्ट दिया, देन इंटरेस्ट दिया, देन लेवरेजेस दिया हुआ है.
फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया, चलिए ब्लैंक. नेक्स्ट EBIT. तो जब तक अपने पास कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट नहीं है EBIT कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू कीप इट ब्लैंक. देन नेक्स्ट इंटरेस्ट इज बीन गिवन टू यू. ये देखिए 200, 300 एंड 1000. So this figure we can write. So write down 200, 300 and 1000. Done. Software interest, what next? EBT. अब EBIT पता नहीं तो EBT लिख नहीं सकते. लेस टैक्स एट द रेट. आपको यहाँ पे टैक्स रेट दिया है 35%. 0.35 दैट इज 35%. तो टैक्स एट द रेट 35%. अब EBT पता नहीं तो टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड लास्ट EAT. नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं, अदरवाइज EPS भी कैलकुलेट कर लेते. ठीक है, ये रहा अपना इनकम स्टेटमेंट. बाकी जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके चलिए क्वेश्चन आपके सामने, आप मुझे आंसर बताएंगे.
Yes, friends, done. Completed? Okay, complete करिए. चलिए डिस्कस करें. So just tell me, what is the sales? 4,500, 9,600, 9,600 and 8,000. Once this figure is correct, then remaining all figures will be obviously correct. 3,000, 7,200 and 4,000. Is it right? So contribution 1,500, 2,400 and 4,000. Fixed cost 1,200, 2,000 and 2,000. So EBIT 300, 400 and 2,000. So EBT 100, 100 and 1,000. Tax 35, 35, 350. So EAT 65, 65 and 650. Has everyone got this answers correct? चलिए डिस्कस करते हैं फिर भी जिनका आंसर नहीं आया हो. हमें बस इंटरेस्ट दिया था, राइट? अब अगर सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं हम? फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वी नाइदर नो कंट्रीब्यूशन नॉर फिक्स्ड कॉस्ट नीदर ईबीआईटी, तो ये फिलहाल हम यूज नहीं कर सकते. लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज आई कैन कैलकुलेट एज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, राइट? फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ईबीआईटी आई कैन कैलकुलेट, एंड वंस आई गेट ईबीआईटी तो ईबीआईटी के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स आई कैन जस्ट गो ऑन कैलकुलेटिंग. इज इट राइट? तो बताइए आपने फेयर में लिखा है वर्किंग नोट्स या रफ में ही कैलकुलेट किया है? वेरी गुड, चलिए लिखते हैं. राइट डाउन वर्किंग नोट 1 EBIT. राइट साइड A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड. तो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT minus interest. So directly will show working. 3 is equal to x upon x minus 200. So 3x minus 600 is equal to x. 2x is equal to 600. Therefore x is equal to 300. There is EBIT 300. EBIT पता नहीं, इंटरेस्ट 200 दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज 3 दिया है. फॉर बी फाइनेंशियल लेवरेज इज 4, तो 4 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस इंटरेस्ट वाज 300 ओवर ईयर. So 4x minus 1200 is equal to x. 3x is equal to 1200. So x is equal to 400. EBIT is 400. And यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? 2. And interest was 1000. So 2 is equal to x upon x minus 1000. So 2x minus 2000 is equal to x. X is equal to 2000. So EBIT is equal to 2000.
Have you written this working? तो एक बार हमने ये EBIT लिखा 300, 400, 2000, then 300 में से 200 EBT interest, EBT 100, 400 minus 300 EBT 100 over here, 2000 minus 1000 EBT 1000. इसके ऊपर 35% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, so EAT मिलेगा. Means this part we can calculate easily, right? अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट हमें कैलकुलेट करना था, अब आपको EBIT दिया हुआ है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, राइट? तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज के बेसिस पे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं? एंड वंस वी गेट कंट्रीब्यूशन हमें फिक्स कॉस्ट मिलेगा, राइट? एंड आपको क्या दिया, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज 75% ऑफ सेल्स, राइट? मींस अगर सेल्स 100 हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 75, देन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25, बराबर. एंड कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज. तो सपोज ये अगर 10,000 है तो आपका सेल्स कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 25%. आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द सेल्स, राइट? So in one working only, we will calculate the contribution, your sales as well as variable cost. Okay, so write down working note 2. Calculation of contribution, sales and variable expenses. Serial number, particulars, right side A limited, B limited and C limited. Serial number A, we will write contribution. कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू EBIT. सो फॉर ए लिमिटेड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया, देखिए 5 इनटू EBIT हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, तो ए लिमिटेड के लिए EBIT कितना था? 300. So contribution will be equal to 1500. Then for B limited, operating leverage दिया हुआ है 6 and EBIT हमने कितना कैलकुलेट किया था? 400. So contribution 2400 and contribution यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज 2 इंटू EBIT कितना था? 2000 का. सो कंट्रीब्यूशन 4000. हैव यू रिटन दिस? सो दिस वी कैन राइट इन योर मेन आंसर, बट पहले ये वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी रिटन इन फैक्ट. सो राइट डाउन सीरियल नंबर बी, वेरिएबल एक्सपेंस एज percentage of sales. Variable expense as percentage of sales. This has been given to you 66 to third, then 75 and then 50. Next line, therefore contribution as percentage of sales. Contribution as percentage of sales. So this will be 33 1/3, 25 and 50. So I can calculate sales as serial number A upon C into 100, that is contribution amount divided by percentage of contribution of sales, बराबर. So 1500 divided by 33 1/3%, or simply you can multiply by
33 1/3% डिवाइड करना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 होगा बराबर 33 1/3% मीन्स बेसिकली इट इज 1/3 राइट सो इट विल बी कंट्रीब्यूशन 1500 डिवाइडेड बाय 1/3 यानी कि ऊपर जब आएगा तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा सो इंस्टेड ऑफ राउंडिंग ऑफ आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 सो 4500 यहाँ पे 2400 इंटू 3 नहीं यहाँ पे परसेंटेज 25 है ना तो ईयर आई कैन कैलकुलेट 2400 डिवाइडेड बाय 25% 9600 and 4000 divided by 50% that is 8000 and here only I can write variable expenses. Variable expenses, this is sales minus contribution, that is D minus A. So 4500 minus 1500 is 3000. 9600 minus 2400, that is 7200. And 8000 minus 4000, that is 4. Done. Now we are supposed to comment also. Comment on the financial position and structure of these companies. So based on this operating leverage, बताइए कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा रिस्की कंपनी है? बी ना, ऑपरेटिंग लेवरेज चेक करिए 562 ऑपरेटिंग लेवरेज जहां पे ज्यादा है मतलब वहां पे फिक्स कॉस्ट हाईएस्ट है एज कंपेयर टू द सेल्स एंड अदर फिगर्स तो ऑपरेटिंग रिस्क वहां पे ज्यादा है तो बी में ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है. फाइनेंशियल लेवरेज चेक करिए यहां पे 4 है राइट सो इट मींस इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट ज्यादा है so fixed financial cost zyada hai so financial risk is also higher so highest risky company is B limited and least risky we can say is C limited right this is what we have to comment based on the given information okay so write down comment can I simply dictate will you write first point likhiye first point B limited is most risky company. B limited is most risky company because its operating leverage and financial leverage are higher than other firms. I'll repeat. B limited is most risky company because its operating leverage and financial leverage are higher than other companies or other firms. Written. Second point. C limited is a least risky firm or least risky company. C limited is least risky company because its operating and financial leverage are lowest. Its operating and financial leverage are lowest than other two firms. Are lowest than other two firms. And third, A limited has moderate level of risk. A limited has moderate level of risk. Done. Now we are going to discuss one concept. हाँ डेफिनेटली जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे वी हैव टू चेक कि उनका रिस्क कितना है. रिस्क मतलब उनका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कितना है एंड उनका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है. तो सेल्स के कंपैरिजन में वो कितना फिक्स कॉस्ट इनकर करते हैं. So that we have to check. जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं we do actually check. Okay.
सो दैट अगर हाईली रिस्की कंपनी है तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना पॉइंट नहीं है। ओके हाँ, कब इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर फिक्स कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हाइयर है एंड पिछले 2-3 साल में उनका सेल्स कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, means slight change in the sales, increase in the sales will result in higher percentage change in the EPS. That time we can invest. Okay, but say sales constant and every time they are incurring more fixed cost, company is very risky in that case, right? So that time we shouldn't be investing in such companies. So investors definitely they have to check financial leverage as well as operating leverage. In fact, जब अब शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं टू थिंग्स, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में फाइनेंशियल्स नहीं देखते, सिर्फ ग्राफ देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखते हैं हम, लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ईपीएस देखते हैं कि कंसिस्टेंटली ईपीएस कंपनी का ग्रो हो रहा है या नहीं, दैट वी हैव टू चेक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है हमें। ओके, विल बी चेकिंग इट। चलिए, कैन वी प्रोसीड? नाउ वी हैव टू डिस्कस वन कंसेप्ट। वी हैव टू एनालाइज वेदर a particular firm is favorably financially leveraged। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल लेवरेज है ये कंपनी ने बराबर लिया है कि नहीं, वो हमें यहां पे देखना। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल एंड विल सी कि अगर फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल हो तो कैसे हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को, एंड इफ इट इज अनफेवरेबल तो इट विल मेक लॉस टू द इन्वेस्टर्स। ओके, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज एक कंपनी है, अपना टोटल कैपिटल जो है से ₹50 लाख है। ओके, अब इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है? से इक्विटी शेयर से हमने 20 लाख प्रोक्योर किया है एंड डेट से हमने 30 लाख प्रोक्योर किया है। ओके, सो कैन वी से दिस कंपनी इज बिट रिस्की कंपनी, क्योंकि इक्विटी से ज्यादा अपना लोन फंड्स है, राइट? सपोज कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% मीन्स व्हाट? जो कंपनी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया है उस पे कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर रही है? 20% रिटर्न जनरेट कर रही है। ओके, अब यहां पे से फर्स्ट सिनारियो, इंटरेस्ट रेट इज 10%। ओके, देन विल सी व्हाट विल हैपन। अब EBIT दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? अब देखिए, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दिस वी आर कंसिडरिंग ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ से हम नहीं देख रहे। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख है उस पे कंपनी अगर 20% रिटर्न जनरेट कर रही है, कैन आई से दिस 20% रिटर्न व्हेन आई एम कंसिडरिंग टोटल कैपिटल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? तो 50 लाख पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से कितना आएगा? 10 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 10 लाख। इसमें से अब इंटरेस्ट लेस होगा, राइट? 30 लाख आपका डेट है, तो 30 लाख पे 10%, 3 लाख। देन EBT 7 लाख लेस टैक्स। सपोज टैक्स है 20%। ओके, तो कितना आएगा ये? 1,40,000। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 5,60,000। सपोज ये जो शेयर्स है फेस वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा? 20,000 ना, 20 लाख डिवाइडेड बाय, तो बताइए EPS कितना आएगा? 28। ओके, नाउ पे हियर 100% अटेंशन। ओके, कंपनी का टोटल कैपिटल, अब टोटल कैपिटल में इक्विटी है, डेट है, दोनों है बराबर। ये कितना था? 50 लाख। एंड इस पे कंपनी ने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट करा है? 20%, दैट इज 10 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20%, राइट? ये हुआ टोटल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ऑन द कॉन्ट्री रिटर्न मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, बराबर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कैपिटल कितना है? 20 लाख, राइट? और पर शेयर अगर मैं कंसिडर करूं तो 100 रुपीज। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रिटर्न कितना दे रहे हैं? इन फॉर्म ऑफ EPS 28, राइट? तो यहां पे अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 28 डिवाइडेड बाय दिस 100, दैट इज 28%। अब समझिए,
जब मेरे टोटल कैपिटल पे रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं 20%, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं 28% रिटर्न दे रहा हूं, बराबर। कंपनी में हर एक रुपए जो इन्वेस्ट हो रहा है, ये टोटल कैपिटल, इस पे हम रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं? 20%, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो हर एक रुपए इन्वेस्ट किया है, इस पे हम रिटर्न इनको कितना दे रहे हैं? 28%. So can we say we are able to increase the return to equity shareholders, right? So can I say this firm is favorably financially leveraged? बराबर है कि नहीं? क्योंकि कंपनी रिटर्न जनरेट कितना कर रही है? 20%, लेकिन आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 28% रिटर्न दे पा रहे हैं। ये हम एडिशनल रिटर्न क्यों दे रहे हैं, और ऑन व्हाट बेसिस वी आर एबल टू गिव देम एडिशनल रिटर्न? कैन यू टेल? हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू गेट। कि जब कंपनी 20% से रिटर्न जनरेट कर रही है, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हायर, दैट इज 28% कैसे दे रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? वो तो फिक्स ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अपना कांस्टेंट है। अच्छा, लिसन टू मी। कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख, राइट। अब ये फाइनेंस कैसे किया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का 20 लाख। तो सोचिए, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप डेट होल्डर्स हो, ठीक है, अपनी कंपनी है, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20 लाख। अब सपोज मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने आपसे 20 लाख लेकर के कंपनी में रिटर्न कितना जनरेट किया है? 20%। इज इट राइट? मतलब आपको रिटर्न कितना देना चाहिए था एज अ इक्विटी शेयर होल्डर? सपोज आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, 20% देना चाहिए था। आपके पैसे मैंने लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मैं बिजनेस से कितना जनरेट कर रहा हूं? 20%। तो 20% में बिजनेस से लेकर के आपको 20% देना चाहिए, बराबर। डेट होल्डर से मैंने पैसे कितने लिए? 30 लाख। अब डेट होल्डर्स का पैसा जो मैंने लिया है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा मतलब आप ही का बिजनेस, राइट, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका पैसा लेकर के हमने इस पे रिटर्न कितना जनरेट किया है? 20% रिटर्न जनरेट करा है, राइट। तो इनका पैसा लेकर के बिजनेस में रिटर्न कितना जनरेट किया है? 20%। एम आई गिविंग देम 20%? नो, हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं उनको? सिर्फ 10%। मतलब उनका पैसा मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस पर मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूं 20%, लेकिन उनको कितना दे रहा हूं? सिर्फ 10%। तो बैलेंस 10% कहां पे जाएगा? बैलेंस 10% जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। तो इसकी वजह से अब ये क्या है? परसेंटेज या प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली 10% ऐड नहीं होगा। आर यू गेटिंग? तो ये जो 10% रह रहा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देगा, उसमें से टैक्स वगैरह लेस होकर के, देयरफॉर इफेक्टिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग 28%। आर यू गेटिंग? सिंपल वर्ड्स में, मैं बिजनेस में रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं? 20%। एंड मेरे डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट की फॉर्म में कितना दे रहा हूं? सिर्फ 10%। डेट होल्डर्स का पैसा लेकर के मैं 20% रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, इनको कितना दे रहा हूं? सिर्फ 10%, राइट। सो कैन आई सिंपली से, व्हेनेवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, द फर्म इज सेड टू बी फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। तो ये पूरा जो डिस्कशन है, इसका बॉटम लाइन, जब आप बिजनेस देखोगे, अगर कंपनी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रही है एंड अपने डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट लोअर दे रही है, कंपनी विल एबल टू मैग्नीफाई द रिटर्न, ओके। ऑन द कॉन्ट्री, इफ आई चेंज स्लाइटली दिस एग्जांपल, यहां पे एक्चुअली टुडे आई हैव टू कंक्लूड बिट अर्लियर, 9:15 बजे तक ही लेंगे मैक्सिमम, 9:20 तक लेते हैं, 9:10 या 9:15 तक ही मैक्सिमम लेंगे, 5-10 मिनट्स विल बी कंक्लूडिंग अर्लियर, ओके। इंटरेस्ट रेट सपोज 25% होता। अब सोचिए, डेट होल्डर से मैंने जो पैसे लिए 30 लाख, उस पे मैं रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं बिजनेस में? 20%, वेरएज डेट होल्डर्स को कितना दे रहा हूं? 25%। अब सेकेंड एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट 25% है, मतलब 5% जनरेट ना होते हुए भी एडिशनल दिया, तो ये 5% का लॉस अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से जो मैंने 20% जनरेट करा था, उसमें से 5% अब इनको जाएगा, तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न कम आएगा, राइट। लेट्स चेक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेम रहेगा 10 लाख। अब इंटरेस्ट कितना होगा? डेट 30 लाख, इस पे 25%, 30 लाख इंटू 25%, कितना? 7,50,000। तो ईबीटी 2,50,000, इस पे टैक्स 20%, कितना आएगा? 50,000। तो ईएटी 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, ईपीएस 10, राइट। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है? पर शेयर 100, एंड इनको रिटर्न कितना मिल रहा है? 10, राइट। दिस इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? 10%।
अब जब बिजनेस 20% से रिटर्न जनरेट कर रहा है, अपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितना दे रहे हैं? सिर्फ 10%. व्हाई? बिकॉज हियर when return on investment, that is 20%, is lower than interest rate, so that time firm is not favorably financially leveraged. Okay, that time you shouldn't be taking loan. And simple सा लॉजिक है, से मेरा बिजनेस है, मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है. अब मुझे पता है कि ये 10 लाख पे मुझे रिटर्न कितना मिलने वाला है. 10 लाख पे मैं बिजनेस पूरा साल जब बिजनेस करूंगा, मुझे पता है मुझे रिटर्न सिर्फ 15% मिलने वाला है, नेट रिटर्न. ओके, 15% रिटर्न मिलने वाला है. अब मैंने अगर किसी बाहर के से डेट होल्डर्स या बैंक से मैंने लोन लिया 10 लाख, ओके, एंड उनको अगर मुझे 20% देना होगा, तो मैं उतना रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पा रहा हूं कि उनको 20% दूं, तो 5% लॉस मुझे ही बेयर करना होगा. तो बताइए लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना. सिंपल कॉमन सेंस है. इसको हमने टेक्निकल नाम दिया है फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज. अगर मैं रिटर्न ही जनरेट कर रहा हूं 15% एंड मैं उनको रिटर्न, फाइनेंसर्स को रिटर्न दे रहा हूं 20%, तो 5% जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो मेरे पॉकेट से जाएगा. दैट विल बी माय लॉस. ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे पता है कि 10 लाख मैं अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो 20% रिटर्न मिल रहा है मुझे, ठीक है. एंड मेरे फाइनेंसर्स, बैंक मुझे 10% से लोन देने के लिए तैयार है. अब मुझे बताइए मैंने लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि उनके पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा एंड उन पे मैं 20% रिटर्न जनरेट करूंगा एंड उनको बस 10% दे रहा हूं. तो विदाउट इन्वेस्टिंग माय मनी आई एम एबल टू जनरेट 10% रिटर्न. इजंट इट राइट? अगेन आई विल रिपीट. यहां पे मेरे पास भले 10 लाख है, ओके, क्या मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं? नहीं करूंगा. मैं दूसरी जगह बैंक में जाकर के एफडी रखूंगा, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिंग माय मनी आई एम एबल टू जनरेट 10%. व्हाई एट ऑल आई शुड बी इन्वेस्टिंग माय मनी, राइट? तो यहां पे 10 लाख मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैंने अगर दूसरे के पैसे यूज करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 0. मैंने उनका पैसा इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न कितना देना है? 10%. एंड मैं उनके पैसे पे रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं? 20%. तो विदाउट इन्वेस्टिंग माय मनी आई एम एबल टू जनरेट अ सरप्लस रिटर्न ऑफ 10%, राइट? दिस इज अगेन फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज. ओके, सो जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंटरेस्ट रेट से, ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल टू यूज डेट कंटेंट. ओके, बट देन यहां पे प्योरली ऑन नंबर्स वी आर सेइंग कि डेट कंटेंट यूज करना चाहिए, बट यू हैव टू आल्सो सी कि रिस्क कितना ले रहे हैं हम, बराबर? क्योंकि फिलहाल तो ये रिटर्न ज्यादा है, हो सकता है आगे जाके स्लाइटली अगर रिटर्न कम हो तो इंपैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स पे ज्यादा होगा, बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज डबल एज स्वॉर्ड है. अगर आपका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस या इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न है हायर परसेंटेज से राइज होगा, लेकिन अगर आपका अर्निंग्स नीचे जाता है तो ईपीएस हायर परसेंटेज से नीचे भी जाएगा, राइट? सो देयरफॉर फाइनेंशियल लेवरेज. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी का एक्सपांशन चल रहा था, कॉलेज एंड टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, राइट? अब उनके लिए सिमिलर सिनारियो था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज वेरी हाई, 30% का रिटर्न था, ओके, एंड बैंक वाज रेडी टू गिव लोन एट 10%. तो बताइए क्या करना चाहिए? डेट कंटेंट यूज करना चाहिए, लेकिन कितना? आपके रिस्क लेवल जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो उतना आपने डेट कंटेंट यूज करना चाहिए. अब उनके केस में क्या हुआ? प्योरली ऑन नंबर्स, नो डाउट डेट कंटेंट यूज करना है, राइट? लेकिन सपोज आपके पास लिक्विड फंड ही नहीं है, ओके, 30% प्रॉफिट है, से यहां पे सेल्स दिख रहा है 100, नेट प्रॉफिट दिख रहा है 30. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. यहां पे खत्म होता है. आई एम जस्ट गोइंग इनटू डीप टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकलिटी. ओके, से मेरा सेल्स है 100, नेट प्रॉफिट है 30, मतलब 30% में प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं. मेरे फाइनेंसर्स मेरे से 10% रिटर्न लेने वाले हैं, ओके, तो उनको तो 10% देना है. मैं रिटर्न कितना जनरेट कर रहा हूं? 30%, एंड उनको मुझे 10% सिर्फ रिटर्न देना है, बराबर? तो मुझे क्या करना चाहिए? डेट कंटेंट लेना चाहिए एज पर दिस कंसेप्ट, बिकॉज द फर्म इज फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 30%, इंटरेस्ट रेट में 10% दे रहा हूं, बराबर? बट प्रॉब्लम समझिए, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने सेल्स किया है 100, नो डाउट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 30% है, मेरे सारे एक्सपेंडिचर 70 है, ओके. ये सारे जो एक्सपेंडिचर है मुझे कैश में पे करना पड़ रहा है, ओके, एंड मैंने जो सेल्स किया है उस पर क्रेडिट पीरियड है से 4 मंथ, ओके, 4 या 5 मंथ. तो मेरा सेल्स दिख रहा है, लेकिन ये मेरा जो सेल्स की अमाउंट है बैलेंस शीट में डेटर्स की फॉर्म में दिख रहा है 100, ओके. तो सेल्स कहने के लिए 100 है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक है डेटर्स में, मुझे कैश में कुछ मिला नहीं है, ओके. सो दिस इज माय बुक प्रॉफिट, लेकिन ये तो मुझे कैश में पे करना है, राइट? तो यहां पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगा, ओके. नो डाउट दिस कंसेप्ट सजेस्ट कि आपको लोन लेना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो सेल किया हुआ है वो मेरा पूरा का पूरा डेटर्स में ब्लॉक्ड है, मतलब मेरे पास लिक्विड पैसा नहीं है, ओके. अब जो मैंने डेटर्स से पैसा लिया है उनको 10 रुपीज तो रिटर्न तो देना होगा, लेकिन देने के लिए मेरे पास लिक्विड फंड्स नहीं है,
ओके, देयरफॉर दिस कंसेप्ट सेज कि अगर आपका, लिसन टू मी अगेन वेरी केयरफुली, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, यू आर फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज, मतलब यूज मैक्सिमम डेट कंटेंट, बराबर। बट डेट कंटेंट मैक्सिमम कितना लेना है, जितना आप रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो उतना, कंसिडरिंग योर लिक्विडिटी। ओके, तो फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू this is correct, but when you are considering from working capital management point of view, liquidity point of view, that time you have to analyze ki your decision to use maximum debt, is it correct or not? Have you understood? ये just practicality के point of view से बताएं। अपने example solving point of view से याद रखिए, अगर आपका return on investment is greater than interest rate, favorably financially leveraged, and if return on investment is less than interest rate, we can say not favorably financially leveraged, that time you shouldn't be using debt content. Have you understood this? चलिए, ये राइटिंग काम एंड इसके ऊपर का जो एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली। ओके, विल कंक्लूड फॉर नाउ ऑल दिस पॉइंट्स, एंड हमें ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी लिखना है। ये क्या है देखेंगे कल। ओके, कल नहीं, मंडे। Tomorrow Sunday you can fully enjoy, no lecture for tomorrow. Accounts का है, then you can enjoy with accounts. Costing है सर, हाँ स्वरूप सर का है।